हेलो गाइस व्हाट्स अप होप यू आर डूइंग ग्रेट वी आर बैक इन अनदर पॉडकास्ट और आज हम इस पॉडकास्ट में शुभम भैया के बारे में जानने वाले हैं हु इज करंटली वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन Siemens. So if you don't know about Siemens, Siemens is a multinational technology company and its technology is widely spread in automobile infrastructures and healthcare technologies. शुभम भैया का करियर भी काफी इंस्पायरिंग रहा है सो अब उनसे ही जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद हमारे साथ है आज शुभम भैया जो इज करेंटली वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सीमेंस. सो मैं तो बोलता रहता हूँ. सो हम जानते हैं शुभम भैया खुद शुभम भैया से. सो शुभम भैया आपकी जर्नी के बारे में बता सकते हैं क्या आप जो लाइक कॉलेज में कहाँ कैसे स्टार्ट किया एंड देन अभी तक कैसे पहुंचे वो सब पूरा. Okay, sure. So I am a graduate of computer science and engineering. राइट. So I come from a very small town, Nanded in Maharashtra, if you know of. So वहाँ पे एक यस यस. government aided engineering college है, HGGS. It's यस. quite famous. So या. of course I got in there, and since it was my hometown, तो मेरे लिए वो easy था, to get there every day and still stay with my family at home. So वो 4 ओके. साल मैंने बहुत अच्छे से गुज़ारे हैं, the college years, because I used to get the experience of college, and then I used to get back at home to have the ओके. food cooked by my mother. So So you weren't living in hostel, so hostel yeah, life में I you. never really, but I think for a span of 2 months, I did live a kind of sort of hostel life when I went या. to East Hyderabad to prepare for GATE. you know ओह राइट so राइट. maybe we'll come to that in the podcast, या. but after that I think यस. I was when you are a small town guy, you have that mindset, since आपका college is not very well known, and उसकी reach इतनी नहीं है, तो maybe companies won't visit, and ultimately uh, what is important for a engineering graduate in this country is to bag a job with high salary. I या. now understand it. It's not important, but that's how it is seen. As a guy at that age, maybe because of coming from a privileged family, I didn't need it, but somehow to show something for myself. I या. completed 4 years bachelor's, and this is my return on investment. So I've paid some Mhm. fees to my college, and this is what I have bagged a job worth X amount, and that 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 is all it was. So एक दिन all of a sudden I realized I was walking campus with my friends कि एक Mhm. placement drive आया है. It was HCL Technologies, and राइट. yeah, they didn't quite offer a lot. वही जो fresher को offer किया जाता है, but I just हाँ. went on that day कि आज bunk मारना था. Anyway, I was going to gallivant around the college campus, so So why so not? so you sat in the drive. या आई सैट इन द ड्राइव. उन्होंने कुछ ओके. प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया, उसके बाद इंटरव्यूज, एंड Mhm. एंड ऑफ द डे आई गॉट सेलेक्टेड. I was good with academics. I've always been a good Mhm. student. Somehow, the way I was brought in my family, so upbringing was a Yes. huge part of it. हाँ. So I got that job, and I gave my first attempt of GATE. Then Mhm. कि व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, तो कुछ रैंक मेरा अबाउट 35 3300 के आसपास था. सो दैट हाँ. couldn't have given me a seat in IIT. So I very much wanted Yes. that कि Mhm. you get that brand, कुछ भी हो. I now find it how juvenile it was of me to think like that. आज मुझे वो Mhm. समझ में आता है कि it wasn't that relevant कि Mhm. आज मतलब I earn the same amount as any average IIT graduate would. So I ओह! don't see a difference now. So but या. वो समझने में थोड़ा टाइम जाता है. Everyone faces this. So या. I सो I एक said. वो Mhm. लाइक ज़िंदगी समझा देती है कि हाँ, ऐसे भी होता है, ऐसे सिर्फ आईआईटी इज़ नॉट द ओनली वे टू लाइक Right. राइट. सो आपके केस में लाइक आप 3rd ईयर में लाइक एचसीएल टेक का ड्राइव आया था क्या? या फिर कैसे Yes, था? yes. I mean, I was in first semester of final year. Third year हो चुका था मेरा. ओके. यस, यस, राइट. लाइक इन Okay. अगस्त सितंबर टाइम लाइक Yes, yes. उसी फाइनल ईयर टाइम का में. स्टार्ट में. हाँ. हाँ, Right, right. हाँ. So in between first semester ही था final year का. So हुँ, I हुँ. was कि मेरे हाथ में एक जॉब था, and हुँ. most colleges they do not allow you to sit further कि आपके पास मिल गया है तो नेक्स्ट now नेक्स्ट let हाँ, others हाँ, have. राइट. So मेरे पास था, and I was determined to do GATE. हुँ. You know यस. कि हाँ, हाँ. और एक बार करना है तो तो अब अब. आपको आपके पास एक लाइक बैकअप प्लान भी था कि अगर अब टेंशन नहीं था कि अगर गेट में नहीं हुआ तो Right. लाइक जॉब जॉब तो है ही, तो लाइक Yeah. नाउ यू कैन फोकस मोर ऑन टुवर्ड्स गेट.
हाँ, राइट। और उसमें एक कैविएट भी था, सिंस माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही हुँ, वाज अ हुँ। क्लास 2 ऑफिसर देन। सो वो हाँ, एक हाँ। प्रेशर रहता है कि आई शुड आल्सो परस्यू द पाथ, गो एंड प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, व्हिच वुड बी अ हाँ, हाँ, वेरी हाँ। वेरी बैड चॉइस। आई विल नॉट हाँ, रिकमेंड इट हाँ। टू एनीवन, कि Yes, right. it is just pure Like waste of like your like young yeah, age. yeah, because I think that we prepare a whole year and then what decide is the 3 hours exam. So And like that exam is not fair, that day right? हाँ, हाँ, हाँ. Like You're that day competing with can go people who have given exam 4 5 times before. How is that fair? How are yeah. you judging? Yeah, 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 right. Completely agree. Yeah. And every year the number of posts which are generated out of this exam, the requirement, it is Mhm. decreasing if you see the trend. So Right, that right. becomes exponentially harder to get in. So when the chances of cracking that exam is so less, I mean, it is just not worth it to even try. That's what Mhm. came to a realization. I still have some friends after these Who are many years still preparing. preparing. I mean, I feel bad, Oh. but certainly that is something, the choice they have made, and they always wanted to do it. There is some kind of craze Mm. for it. Right. Again, I usually blame the society which mends, or जिस तरीके से डेकोरेट किया जाता है गवर्नमेंट जॉब को. But I Mhm. guess in today's world, private job is the most best bet you could place on, because at least you get paid very well. अब Yeah, अगर yeah. आप आईएएस So ऑफिसर like भी बन जाते हो तो you हाँ. won't get as much as if सैलरी you एज़ had. या Yes. लाइक गुड कंपनीज़ जितना देते हैं उतना ल तो पहले कैसा लाइक पेरेंट्स लाइक मोस्ट ऑफ द सोसाइटी जो अभी है वो पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स की जनरेशन की है। तो लाइक दे यूज्ड टू थिंक दैट एक सिक्योर जॉब होता है जो गवर्नमेंट का ही होता है। बट अब ऐसा Mhm. नहीं है। अब आपके पास अगर एक टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं, तो आप अगर आपको एक कंपनी कुछ कर भी दे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें आप लाइक यू कैन गो ऑन एंड लाइक तो सिक्योरिटी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अब, ऐसा सिक्योर लगता है। कुछ भी नहीं होता. आई मीन, इट्स वेरी रिस्की. यू डोंट नो इफ यू आर गोइंग टू लिव टुमारो. सो हाँ, एवरीथिंग हैज अ रिस्क, बट आई स्टिल बिलीव कि प्राइवेट सेक्टर में सम कंपनीज आर सो गुड, लाइक माय ओन एम्प्लॉयर Siemens, one हुँ, of the best employers where you get the best work culture. That राइट, was the reason solely I chose Siemens, because it is a great place where you could grow and learn, and the company culture is so nice, which fosters this growth. So that was the primary reason. So while being at HCL Technologies, when I joined it, plan तो वही था कि parallelly I'll prepare for GATE, हुँ, and it went ahead, और वहाँ पे कुछ मेरा ट्रेनिंग हुआ 3 months. फिर there is something called as bench, where हुँ, you are not allocated to a project, so you are a resource they have hired, but they have not allocated you. It's completely their fault. So हाँ, that was a golden period. I enjoyed कि ट्रेनिंग होने के बाद, but training was very good. HCL Technologies हाँ, की जो ट्रेनिंग दी थी मुझे, राइट, so हाँ, they prepare you for a very niche domain called PLM, product life cycle management. So राइट, 5 months I worked at HCL, and then I was interviewed by uh, Siemens Digital सीमेंस Industries. तो राइट, वो उनके सर्विस पार्टनर है, सो दे कीप ऑन टेकिंग हुँ, एम्प्लॉयज ऑन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एचसीएल टेक्नोलॉजीज. राइट, राइट, सो आई वाज ट्रांसफर्ड देयर. तो वो पुणे में ही था. सो देयर इज दिस बालीवाड़ी हाई स्ट्रीट लोकेशन वेयर दैट Siemens हुँ, office is present. It is a very nice campus. I mean, you feel like you are at an airport when you enter that building. But it's so big. I यस, think 2,000 people sit there हुँ, at one time. So it was very nice experience. I learned many things. So I was trained on C, C++, but when हाँ, I was interviewed in C, C++ at the Siemens हाँ, PLM, and then when I finally started there in a team, uh, हुँ, I was started as a front end developer kind of a guy. मतलब सो what? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पे आ गए क्या? No, no. Then they used to use Angular JS, which is now deprecated. ओह! एंगुलर या, ओके, राइट। So सो रिएक्ट जेएस से तो पहले एंगुलर जेएस ज़्यादा हाँ, तो yes, उसपे yes, but वो deprecated हो गया है by the तो time I left. देन दे गिव यू द ट्रेनिंग टाइम फॉर लाइक एंगुलर जेएस अ, और नॉट? See, that is वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इट्स नॉट एप्लीकेबल इन प्रोडक्ट कंपनीज. ट्रेनिंग दी हुँ, जाएगी. इट्स वेरी सर्विस कंपनी का कॉन्सेप्ट कि वहां पे दे हुँ। ट्रेन यू. So they will give like 1 or 2 weeks to like prepare, like maybe to go get a Yeah, grip you on have the to ask. that Yes, yeah, yes. yeah, But I think the best way to right. learn is to start working. You cannot Yes, right, right. individually take time, learn properly. It doesn't work. I have tried it. I have failed so many times. So from experience, I would say ki just start working and learn on the way. That is the best strategy to follow. So I learned Yes. basics of Angular, and then right away started working. Then I came to know कि they had their own frameworks and everything. तो वहाँ पे हुँ,
to understand those things as a fresher, it was difficult, but eventually you get hold of it. And I liked working there. I mean, I learned so much. You learn about agile because they followed something called as scaled agile, which is agile Mhm. methodology implemented in some very large organizations like the Siemens. And Mhm. so I got to know about that overall process, how it works, how is a scrum team. It has developers, it has a scrum master, it has a product owner, it has a product manager. Right, right. But that is how I started. And then somehow, mm, after a level 1.5 year later, you get saturated, you get acquainted with all Mhm. processes, कि कैसा काम होता है, Right. क्या technology use हाँ, कर रहे हैं, what are their plans. So it was very chill life, कि work life balance, that's what Siemens gives. So हाँ, वो मुझे पता था, उनकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. But हुँ, somehow after staying there for 1.5 year and knowing कि you have differences in your salary structures, कि हाँ। the Siemens एज़ employee, अ कॉन्ट्रैक्ट yeah, एज़ अ you you कॉन्ट्रैक्ट you वर्कर you, थोड़ा you अलग होगा वहाँ पे। हाँ। yes. So या so it's obvious you try to find better opportunities. And राइट, मेरा कुछ bond भी था कि if ओके। you leave 1.5 years before, you will have to pay like 1.25 lakhs or something Mhm. to break that bond. So 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 you I worked there resigned for like once. oh, Uh-huh. okay. Okay. So I did not have a job offer, but I still resigned to just see what हाँ, happens. And then I came to know that this is the amount I have to pay, otherwise I won't get the experience letter. And only 3 months ओह! were left. So I again ओके। took back my resignation, stayed there 3 months, या and then resigned again. ओके, कि राइट, I राइट। that much I 1.5 wanted. ईयर्स होने होने के बाद, हाँ। होने के बाद. So हाँ जी। I remember कि telling this to my family कि बस बहुत हुआ, मेरा मन नहीं लग रहा, and I have done enough, I have learned enough there. They just cannot help me grow further. हुँ, And हुँ। growth in terms of financially मुझे चाहिए था. So I हाँ, said कि हाँ। I'm going to quit. So I quitted. 3 months notice period में ही I started finding a job. My notice हुँ, period हुँ। ended and I couldn't. And ओह! luckily COVID had started then, कि स्टार्टेड या 2019 के आसपास. So हुँ, हुँ। I was at that अगस्त में मैंने लीव किया 2019 में. तो I was unemployed for 20 days. So that was a very different experience, because now you know कि end of the month कुछ नहीं आने वाला in your bank account, which you are very हाँ, used to. But राइट, राइट। still I think I took that risk कि कोई बात नहीं यार, मतलब we'll see. But after 20 days I was still interviewing, and there is one American firm called Apisero. They were a small company राइट। then. So they were hiring, and I got in. And I got in as a lead engineer. So I was leading a small team of two freshers. But there's something कि at that stage कि ठीक है यार, 2 साल के एक्सपीरियंस पे you're doing this. हुँ, हुँ। So I wanted to explore कि what is their domain, how are they working, you know. So they worked in हुँ, हुँ। integration domain. They completely had their business driven over usage of a software called MuleSoft, which is owned by ओके। Salesforce. हाँ, हाँ, So या आई हैव हर्ड वो अबाउट मुझे, म्यूलसॉफ्ट या। yeah, so वो it's like if you have one MuleSoft developer, it is equivalent to 5 Java developers, because that's how हुँ, that tool makes it easier to create ईज़ियर APIs. टू या Yeah, so गॉट इट। वो मुझे सीखने मिला. And moreover it was like मुझे लगा कि it was, even though it was a lead engineering job, but it was more of a management वो बनने लगा, because हुँ। I used to तो distribute आप लाइक यू आर yeah. लाइक इतना जल्दी कोडिंग नहीं छोड़ना। Right, ऐसा था right, क्या? exactly. So मुझे लग रहा था कि I am leaving coding so early, क्योंकि the हाँ, freshers, they are still in touch या with me, कि हुँ, they are growing. So हुँ, हुँ। uh, I used to distribute the work and they used to do it. So there was nothing else left for me. So या what was I doing being an intermediary? So और मुझे लगा कि I'm losing touch to coding. And हुँ। somehow again I started searching कि I'm not fulfilled here. It was a great सो company. They इसमें also built वो a great culture. Mhm. एस्पेरो वो जो कंपनी थी सो हाउ डिड यू अप्लाइड इन देयर लाइक अ कैसे और उस टाइम पे हाँ, लाइक तब कैसे हाँ, ओके. तब या या Naukri.com was very prominent. If ओके, you put ठीक है, something या on Naukri, you would get हाँ, calls. हाँ। And it was that peak period where वो job switching, कौन बनेगा लखपति हुँ। चालू था. People were switching jobs to कोविड वाज़ implement दैट their टाइम softwares. या Yeah, yeah. अब वो बंद हो या चुका है. So I have been that lucky guy who went through that period, हाँ। who made 2 switches successfully. So in that COVID period itself, I joined Apisero. मैंने उनका ऑफिस का या चेहरा भी नहीं देखा. I left within 8 months. So उसके बाद हाँ, they only came home, picked up their laptop and went. कि ओह! मतलब it was pure remote work. हाँ, हाँ, And हाँ। I think interesting experience.
something which taught me as well. या Then सो I उसका स्विच वो स्विच पे लाइक सैलरी का ग्रोथ कितना लाइक कितना एक्स था अगर it ऐसे was नंबर्स में नहीं 2x. बोले तो? 2x ओके, 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 It ओके. was देन 2x, and देन then हाँ, again I switched. So I got one offer from Dassault Systems after eight ओके. months. Uh, हुँ, हुँ. but then again I was again reached out by Siemens. This time I did not know हुँ. this Siemens is the same one I worked at. हाँ, This हाँ. was a different entity. तो आज मुझे पता चलता है कि how big Siemens is. कि Siemens under Siemens umbrella there are multiple verticals और हर एक हुँ, vertical हुँ. की अलग entity है. हुँ, हुँ. So it's that big. They are in healthcare, they are in mobility, they are in digital industries, मतलब product life cycle management and हुँ. AutoCAD वाले softwares. So हाँ. they're into so many things. Then I came to a realization जब मुझे offer मिली कि नहीं मैं उसी office को नहीं जाने वाला. This is a different हाँ. office. I डिफरेंट mean, it ऑफिस is से. right on Baner Road, so it's closer in proximity, but हुँ. still, it is not that same office. It is like a degradation, I would say. And again, they're getting So full. They are trying. that office was so like Excellent. I mean, so huge. far that was the best. Yeah. Even या HCL सो Technologies office is great. हाँ. ओके. सो आपने सीमेंस और लाइक डसॉल्ट में भी एज़ अ नौकरी डॉट कॉम से अप्लाई किया था या फिर Yes, yes, it ऐसे? was Naukri only, and I think I also applied through their websites individually. जाके ओके. filled, so सो I got picked up. सो लाइक पता पता चलता है क्या कि कहाँ कहाँ से एक्चुअली उन्होंने प्रेफ़र किया है एज़ अ नौकरी डॉट कॉम से या फिर वेबसाइट उनके? I mean, नौकरी से I'm not sure. Maybe मैंने वेबसाइट से ही किया था for Dassault हुँ. Systems, और हुँ, हुँ. they reached out. They had 2 rounds of interviews and I cleared them. They gave me हाँ, an हाँ. offer. तो हुआ ये हाँ, कि they gave me a number to write, और हाँ. since being new at this thing, I wrote a number little bit less. तो जितना उनका एक्सपेक्टेड था लाइक यू रोट मुझे लेस. लगा हाँ, कि हाँ. I wrote less. I should have हाँ. written more. तो my still job search was going on, and Siemens हाँ. का थोड़ा I was in process. Siemens हुँ, की भी हुँ. बहुत they have very difficult process because they don't hire much, unlike other हुँ, हुँ. companies. If you see आज Google और Facebook की जो हालत है कि हुँ. they had to fire 10,000 employees. If you heard the news, Yeah, I mean, so much yeah, for yeah. AI ML companies. They couldn't Yeah, even they estimate have how much they hired need. so much like in lockdown that now they can't. That is a very bad decision, and you can't Mm, expect organization as big as Facebook and Google would do it, but right, they did it. right. If you hear Siemens reputation, it is so not like this. They have never Mm, laid off. ऐसे कभी नहीं mm, किया है. Maybe the also reason is the packages offered are not as high as Google, Facebook or other companies, but it has its perks. You know, other benefits I get a lot. तो मैंने दसों को नहीं बोल दिया, and then Siemens offered me. तो उनसे कुछ ज़्यादा ही. And then Apisero tried to stop oh, me. They offered me more than Siemens. Ki oh, we will give you this much, and also we'll give you, if you stay for a year, we'll give you lakhs more as a retention bonus. Ki हाँ, 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 रुक जाओ. But I still chose Siemens. Ki मैंने बोला नहीं, I cannot stay with you because हाँ. I'm thinking I'm losing touch with So, coding. हाँ, 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 हाँ. And so they tried. So as a small company, I was surprised to see that they are trying so much. They are trying to maintain a Mm, culture. It was a service based company, but still I think it is now acquired by a larger entity called Entity Data. That is the name mm, of the company. So they acquired Apisero, and I've referred one of my friends, and he got it there. So he also said ki, yeah, they offered a lot of money. Yeah, then that's what they did really do. But then you have to set your priorities clear. Ki what do you need? Mhm. कि what Right. exactly you want. And I was very sure क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया था एक एंटिटी के साथ काम करके सीमेंस के कि it was really Mm. great. You know, you feel happy there. So you were knowing that सीमेंस का वर्क कल्चर कैसा है और Yeah. लाइक आपको पता था कि उसमें ज़्यादा चिल है और मतलब लाइक एज़ अ लाइक वर्क वर्क कल्चर भी अच्छा है और आपका ग्रोथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि Right, आप right. या So it is a great place to learn, you know, because they provide. मुझे LinkedIn learning free है. I have Coursera free. So if I do some course, I don't have to worry कि who will pay. The company pays for it. राइट, So राइट, राइट, so राइट। so you know the facilities they provide. You know, it's very nurturing place. It हुँ, it it हुँ। it, it really wants you to grow. You know, I've always राइट। been. Uh, Somehow I have been lucky. Maybe not everyone has the same हुँ, हुँ। experience as me, but I've always had supportive managers and seniors who have always helped. और मैंने कभी वो सर्विस बेस्ड वाला वो बैड कल्चर कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया. आई विल नॉट नेम द कंपनीज बट आई हैव हर्ड वी नो बैड वी स्टोरीज. नो So one such या okay, you might be knowing, but one such friend of mine who is at Siemens right now. So he came and he was so shocked. He said,
कि यहाँ पे कोई अटेंडेंस चेक नहीं करता, like no one notes my timing when I enter and when I go out. And I was shocked because I never experienced it firsthand, but he did. Hmm. कि that Hmm. much micromanagement used to happen at those Hmm. organizations, particularly the service-based ones where he came from. Right. So now he was so shocked कि यहाँ पे कोई मेरा time नहीं देखता. No one cares when I come and when I go, as long as I do my work. And see, that is the great thing. कि how it is a 175-year-old company, so they know how to do Hmm. business. So they know they have set a culture. So that is हाँ. what it is well known for. So you feel pride कि you are part of such a older entity and such a big entity when you work there. Yeah. So वो उन्होंने So maintain so किया. हम्म। हाँ, सो लाइक इंटरव्यू प्रोसेस आपको अगर याद होगा क्या सीमेंस का? तो लाइक कितने राउंड्स थे? लाइक पहले तो किस पे एक बेस्ड ऑनलाइन था? टेस्ट हुई। इट्स कोविड का हाँ। था टाइम, सो हुँ, इट वाज हुँ। वेरी क्विक देन कि हुँ, पहली एक हुँ। ऑनलाइन टेस्ट हुई, देन आई वाज इंटरव्यूड टेक्निकली हुँ, by हुँ। an engineer there, and I cracked that. Then I had a managerial round. I spoke with that guy. You know, he made me so comfortable. I mean, he did not ask me anything, but he asked me, "What do you do?" Then he started talking. I like cricket. Then I mean, that was completely haphazard discussion. It had no agenda. Only हाँ, in हाँ, the हाँ। end, he asked me about what my expectation was and everything. So I told him, "Ki my current organization is offering me this much, and you're offering me less." He हुँ, said, "I know we are offering it less, but I'll try to push it as hard as you can. Then you decide what you need to do." Because हुँ, he somehow knew कि I knew what हाँ। Siemens culture was, because I made that very clear because I was part of Siemens PLM. So आप so they must be knowing that you have worked in Siemens already, right? Yeah, Like, and that's yeah, why yeah. they did not budge. They say we cannot go this much. That's because हाँ, yeah, I think Siemens takes very obstinate stance कि हम just हुँ, because दूसरे कर रहे हैं हम नहीं करेंगे. So they don't do हाँ, it. They even did the same thing while selling their product. I remember in PLM, one of my हुँ, product owners or someone saying कि uh, why are we doing taking this approach? We don't sell our product like that. ठीक है, we don't want हुँ, them. So they have that standard. तो उनका एक brand है. So हाँ। so he knew कि I knew that brand value और मैं यही एंड choose करूँगा. लाइक आप थोड़ा कम भी हुआ तो यू विल चूज़ हाँ, I दैट। mean, come on, या। एक 2 लाख के लिए I wouldn't have taken a bad Right, right. decision. Siemens, yeah. Anyone Right. will go with it, yeah. I mean, yeah, it's a great organization. I see people so obsessed. I mean, on LinkedIn, most of the time, when you reached out, I thought, oh, another referral. I've referred so many people, but somehow Yeah. they're very picky and selective, and the process हाँ, is, yeah, yeah. I'll say, a little vague. Now I see हुँ। it because I've experienced this. I've referred so many people, but none of them got in, and so it's very strange. But somehow a guy went to a managerial round and he was rejected then. So it feels ओह! bad, but there is nothing you can do. So तो हुँ, वो हुँ, उनका है कि they are very picky. हुँ। क्योंकि वो लेते ही कम है, so they don't have to fire when the time is bad. So राइट। I think सो that is a एज़ अ smart way to. फ्रेशर्स भी हायर हायर करती है क्या Right, सीमेंस? it hires freshers directly from their college के ओह, साथ tie कॉलेज। up है. राइट, राइट, PLM used राइट, to hire it राइट। from IITs and NITs. This one does with एव हाँ, some government college in South India and some in North या। because I meet people there. So हुँ, they say that's हाँ, about it. I mean, I work as a C++ developer here, C++ 17, which हुँ, is I think the highest standard. Still, people are on C++ 14, 11, and 98. Other हुँ, companies with हुँ, C++ products. So that is something I'm working on right now. So that's या। all of my journey. Yeah, that was quite interesting. So how did you like learn C++ and Hmm. like अब जब जब you when you were preparing for GATE, maybe at that time you came through like C and then like you switched to C++. Is that the case? I mean, C++ I didn't even प्रॉपर्ली टच टिल आई जॉइंड एचसीएल, यू नो. तो कॉलेज में तो हम्म। मैंने कभी किया नहीं था. इन कॉलेज सी पे ही हाँ, काम चला था. सी ही सिखाई राइट गई थी. वो। गेट में भी सी ही पूछते हाँ, हैं. राइट, राइट, राइट। एंड तो एक इन गेट की कॉलेज वजह आई से डिड आई थिंक, जावा. हाँ, गेट की वजह से आई थिंक सी का पूरा और डेटा स्ट्रक्चर और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर डिजाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स राइट, में भी राइट, इसका इट हेल्प्ड. बेसिक पूरा क्लियर हो जाता है। एक्चुअली उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि वो यस, सारी यस, चीजें मुझे क्लियर हुआ हो है. जाती हैं, फिर चीजें चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आने लगती हैं। राइट, राइट. राइट। गेट और मैंने गेट 3 बार दी है. यू नो, द फर्स्ट टाइम माय रैंक वाज लाइक अराउंड 3300, देन इट बिकेम 2600 एंड देन 1050, द वेरी रिसेंट ओ। अटेम्प्ट. पर वो बढ़ता गया है ना. इफ आई कुड हैव कंटिन्यूड, आई वुड हैव. बट देन या। तब तक यू नो, व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री यू लर्न कि यार कि व्हेन यू स्विच वो जो सैलरी अमाउंट व्हिच यू ऑल
maybe it is not drastic as an MTech from an IIT, हाँ especially हाँ हाँ computer हाँ science would get, हाँ but बट still, उतने उतने टाइम में लगभग उसके आसपास पहुंच जाते हैं लाइक या मैं ऐसे होता है। मतलब अब हाँ, मुझे मुझे लगता है कि या यू यू डोंट हैव टू, आफ्टर वर्किंग इन 5 years मे बी, यस, यू नीड टाइम, बट ओवरऑल वो सेम हो जाता है, मतलब कितना ही हाँ देंगे, देयर इज सम कैप कंपनीज कैन ऑफर हाँ यू कि हाँ 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 अ, उससे ज्यादा यू डोंट गेट इन हैंड, तो आपकी इन या हैंड सैलरी जो और आती है। ऐसा भी है कि आपने वो 2 साल में जो एमटेक नहीं किया आपने उतने में कुछ कंपनी एक्सपीरियंस लिया आपने राइट, उस राइट, टाइम में भी सो ज्यादा सीखा वही है तो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि या आपने सिर्फ उसी कॉलेज। में सीखा। सो दैट इज द थिंग ना, कि व्हेन यू आर आल्सो वर्किंग, यू ऑफिशियली गेट एन हाँ एक्सपीरियंस लेटर, so ki राइट you have worked across this organization for 2 years. So I was not only preparing and exploring this other side of appearing for gate and trying to get a good rank to get into an IIT later on. आज मुझे लगता है कि you don't need education other than bachelor's. And what the companies have done is कि जिस तरीके से वो पोर्ट्रे किया जाता है, the CTC 50 lakhs, CTC stands for cost to company, so that is the cost they will bear for you. It is not something you तो get. उसमें Okay, राइट सो उसमें बहुत so सारे डिविजन्स होते हैं। राइट, तो या 50 lakhs में अबाउट मुझे लगता है 20-25 lakhs के तो स्टॉक्स ही होते हैं, स्टॉक्स स्टॉक्स। एंड दे आर वेस्टेड ओवर पीरियड ऑफ 4 years, मतलब अगर आप 4 साल कंपनी में रहोगे, देन यू वुड गेट ऑल दैट अमाउंट, अदरवाइज इफ यू राइट लिव इन बिटवीन यू विल ओनली गेट 25% और 30% ऑफ इट, और लाइक उसी वो में आप एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा क्लेम मिलता है, होता है या राइट ऐसा कुछ हाँ तो ओवर द पीरियड ऑफ 4 years, बट जो मुझे इन हैंड आता है इट वुड बी सेम एज अमेजोनियन और अदर फैंग other कंपनी गेट्स इन yeah इंडिया. yeah yeah So when I left Apisero, I was kind of Java developer, and I joined Siemens as C++ developer. हाँ हाँ Okay. हाँ So अब you must be having question कि मुझे पूछा नहीं गया कि your experience is not in C++, and हाँ how हाँ did they hire me as a C++ developer? एंड देन आल्सो इन सीमेंस लाइक जो पहले करते थे एचसीएलटेक से उसमें एंगुलर जेएस पे थे। Yes, उसमें Angular JS पे था, but it was like कि उनके दो प्रोडक्ट थे, एक प्रोडक्ट का सर्वर हाँ C++ में था और उसी का इक्विवेलेंट एक हाँ वेब प्रोडक्ट था, which was in Angular JS. ओह ओके, सो राइट अगर राइट काम वहाँ का आता है तो यू हैव टू स्विच. सो आई वर्क देयर इन ऑल द टेक्नोलॉजीज, एंगुलर जेएस, जावा, सी, सी प्लस प्लस, सीमेंस पीएलए में हाँ मैंने ये सब किया है, क्योंकि इफ टिकट कम्स, वहाँ का बग आता है, तो यू हैव टू हम्म स्विच ऑन एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट. तो पूरा वो एनवायरनमेंट ओह सेटअप से लेकर सब कुछ चेंज होता था. हियर आई सो मैंने लिटरली डोमेन स्विचेस किए हैं कि फर्स्ट कंपनी द डोमेन वाज कंप्लीटली डिफरेंट, कि वहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट था. सेकंड डोमेन वाज इंटीग्रेशन डोमेन एट एपिसेरो, कि ऐसा भी कुछ हाँ होता है. आई केम टू रियलाइज, एंड नाउ हियर अगेन आई एम एट अ डिफरेंट सीमेंस एंटिटी डूइंग ट्रेन, वर्किंग ऑन अ ट्रेन प्लानिंग सिस्टम. सो वो ट्रेन का एक डोमेन्स पूरा पूरे डोमेन डोमेन्स है. चेंज कर राइट. ओके इफ वी लाइक लुक इन स्टूडेंट्स लाइक अभी जो कॉलेज में है सो दे मोस्टली चूज लाइक अगर कोडिंग करना हो तो सी प्लस प्लस करते हैं बट जब डेवलपमेंट करने की बात है लाइक जब प्रोजेक्ट्स बनाने की बात है सो दे स्विच टू लाइक जावास्क्रिप्ट या फिर लाइक रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड बैक एंड के जो नोड जेएस ये सब है तो इस पे स्विच कर जाते हैं तो लाइक मोस्ट ऑफ लाइक स्टूडेंट डोंट नो अबाउट लाइक सी प्लस प्लस का क्या है उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं क्या। About C++, it is likely to remain a prominent language in the future, especially हम्म in performance critical and system level programming. Or हम्म it has been evolving as a language. So I don't know if you know about it, but from C++11 we have concepts like smart pointer, because C++ राइट राइट as a language, it does not do garbage collection as Java or any other language does. Like even C हम्म sharp, it has garbage collector, so you don't have to explicitly think of managing the memory. Okay, but in C++, somehow C++ लिखा ही ऐसे है कि was it gives programmer that control over the memory, yeah how you want to use it. So अगर आप कुछ use कर हाँ रहे हो, it's your responsibility to free it. राइट जावा में ये नहीं होता, सो या सी सो शार्प में ये इसीलिए नहीं ऐसा होता. है क्या या फिर मतलब मोस्ट ज्यादातर सी प्लस प्लस कोड बेस जो पहले लिखे हुए हैं उसमें मेमोरी लीक ऐसा कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी उसकी वजह से होता है Yes, क्या। yes, because हाँ it's your या responsibility to manage every या uh, लाइक memory or बनाया its था उसको डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय भी करो। destroy भी करो. That is हाँ what C++ way या is. या जावा में या बनाओ. जावा JVM will take हम care of देखेंगे destroying things for you. वो या कचरा साफ या सफाई करेगा. In C++ हम्म it says तुम्हारा कचरा तुम साफ करो. It's as simple as बट that. नाउ आप सी प्लस प्लस एज जैसे अपग्रेड हो रहा है न्यू वर्जन्स पे तो लाइक इम्प्रूवमेंट्स ला रहा है लाइक वो भी आप जैसे Yeah, I आपने think बोला स्मार्ट पॉइंटर smart और pointer is great improvement, because then you don't have to worry about managing that chunk of memory which you have allocated. कि what राइट smart pointer says is कि एक local variable बनाओ which will be a wrapper around a pointer. When you राइट make pointer using new keyword,
dynamically memory is allocated. So what that means is हाँ कि heap section of memory heap से allocate होता है वो memory का chunk, हाँ 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 and हाँ then it's like कि you have to free it, otherwise दूसरे हम्म programs को it will see as कि that memory is occupied by someone, so उनके लिए वो हम्म space available नहीं है. So if you do not राइट free it, that's what causes memory leakages. कि आपके application ने ओह space तो वहाँ बना दिया पर उसने free नहीं किया. हाँ So other applications will think कि हाँ memory है नहीं, पर memory है, but it's like हाँ garbage. So that is called memory हाँ leakage. कि memory होते राइट हुए भी other application will get राइट the राइट perception जब हम कि उसको memory है. हाँ राइट जब उसको हम जाके देखेंगे वो मैनेजर में तो उसमें वो दिखेगा कि वो उतना है वहाँ पे एलोकेटेड वो फ्री नहीं हुआ राइट, वो फ्री नहीं हमें हुआ, दिखेगा फ्री वहाँ किया पे नहीं हाँ है, हाँ वही एप्लीकेशन है जिसने हाँ allocate किया है. राइट तो how smart राइट राइट pointers solve it कि they create a wrapper around that pointer variable. कि हम्म एक लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब एक कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है एंड यू क्रिएट अ हम्म लोकल वेरिएबल इनसाइड इट, तो तो उसका उसका स्कोप उतना ही होता है कि हाँ राइट क्या एंडिंग कर्ली राइट ब्रेस तक होता है, तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट डिस्ट्रॉयड फ्रॉम टाइम. राइट सो राइट राइट वो लोकल वेरिएबल इज नाउ अ wrapper अराउंड दिस पॉइंटर. सो लोकल वेरिएबल का डिस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, when it so it will automatically मतलब वो स्मार्ट पॉइंटर का डिस्ट्रक्टर कॉल होके व्हाटएवर wrapper का पॉइंटर था तो डिस्ट्रक्टर में कोड लिखा होता है कि फ्री वो दैट. हाँ कि राइट तो आप so now what you want to do is just declare smart pointers and wrap your every actual pointer code in that local variable. और वो जब automatically local variable destroy होगा तो automatically वो destructor call करके वो memory भी free होगी. So now one way I don't have to manage that explicitly freeing. I can just allocate and create a wrapper around it, and I don't have to worry about या freeing it. So राइट that is really smart, and that's why they are called smart pointers. So and again there has been changes with STL, standard template library, concurrency algorithm. So whenever a performance critical application will be needed like gaming or anything, and here in railway systems also the standards are developed in such a way that uh, you have to follow a very specific version of C++ and do the process in a very standardized way. तो आप कुछ अलग नहीं कर सकते. So such legacy applications are also written in C++. So in हाँ future, yes, C++ will exist, but then it has a direct competitor called Rust. रस्ट So रस्ट हाँ yeah, so Rust is like it focuses on concurrency and a strong type system. So if you see सिक्योर सिक्योर मोर सिक्योर लाइक बना देगा क्या like it's like TypeScript or JavaScript. So Rust ओह is like TypeScript, so they focus on types more. Ab C++ में you have हाँ auto keyword, which will हाँ automatically हाँ हाँ deduce the type. कि you don't have to राइट worry about writing the type डेटा explicitly. टाइप हाँ But so वो एक चीज है कि Rust में continue to gain traction. But जब तक वो Linux kernel का कोड Rust में पूरी तरीके से जब तक वो rewritten सी नहीं प्लस होता, में रहेगा वो तब तक सी प्लस प्लस कहीं नहीं जाने वाला it is in C actually, but वही सी हाँ there is a possibility that a few things, few modules in Linux kernel could be rewritten using Rust because of its better memory, safety and concurrency. But still कि वो पूरी तरीके से C++ को replace करेगा, I don't see it. And again, I don't worry about that because I'm very technology agnostic. कि कल अगर मुझे कुछ और दिया जाता है कि you सो have to सो work in सो आप हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अगर कोई नया टेक्नोलॉजी है वो तो वो भी सीख लेंगे ऐसा है। right. या So now here also you have to distinguish ki, do you want to become a software developer or a software engineer? Because developer हाँ, knows how to program, he will program it. हाँ, But a software हाँ, no engineer knows how to engineer something. You know, it is different from development. Develop बच्चे भी कर हाँ, लेते हैं यार 10-11 साल के. You know, but what a software engineering will bring to that development is ki, हुँ, how efficient that product will work, how long it will stay, how quickly it will respond. So you should aim at becoming software engineer, not just developer, इंजीनियर you know. ये चीज़ मेरे को लाइक डिफरेंट है ऐसा पता नहीं था पर अच्छा है। या लाइक लाइक इट मेक्स मोर सेंस नाउ या लाइक सॉफ्टवेयर क्योंकि वो इंजीनियर बनना सॉफ्टवेयर है। इंजीनियरिंग एज़ अ सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में, बट हुँ, वो मुझे नहीं हुँ, लगता कहीं पे भी ढंग से पढ़ाया जाता है। बट व्हेन यू कम इनटू द हुँ। इंडस्ट्री यू रियलाइज़ हाउ इम्पोर्टेंट दैट वाज़ कि राइट, राइट। लाइक अभी जो बीटेक में अपन होते हैं तो लाइक मोस्टली जो लाइक एक तो डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग पे फोकस करते हैं। बट अगर हुँ, किसी ने गेट किया है तो बाकी सारे सब्जेक्ट पे कर लेते हैं। बट सॉफ्टवेयर एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये सब जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लाइक मोस्टली थ्योरी याद करके पेपर लिख के आ जाते हैं, ऐसा रहता है। लाइक या उसमें आई मीन समझने की मैंने कोशिश तो कोई वो नहीं करता। डायरेक्ट इंडस्ट्री में ही सीखा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने राइट। भी जैसे बाकी सब करते हैं वैसे किया था। सो हाँ, हाँ। नथिंग डिफरेंट, बट या आई हैड टू लर्न अ चंक ऑफ दैट एंड प्रैक्टिकली मुझे सीखना पड़ा। दैट वाज़ आई थिंक हुँ, ठीक है, नॉट अ ह्यूज लॉस,
बट वही हाँ। अगर ये चीज़ें सिखाई जाती तो आई कुड हैव बीन बेटर इक्विप्ड लाइक सब टू लोग जो एक्चुअली अभी सीख भी रहे हैं वो मोस्टली एज़ अ लाइक इंटरनेट से ही सीख रहे हैं। वो गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया या फिर जो ऐसे हो गया वैसे वहीं से सीख रहे हैं। राइट जितना आई मीन इंजीनियरिंग कॉलेज से सीख इंजीनियरिंग कॉलेज से मुझे नहीं लगता कोई सीखता है कुछ आई मैं थिंक कोई यू कोई यू कोई गेट देयर टू जस्ट गेट द डिग्री so that you will have some valid you get there to just know what is the syllabus and then you learn that from और yes कहीं I से। mean I myself used to study subjects from NPTEL कि कॉलेज के टाइम हाँ, पे yeah, like they are a great source of right. learning but still not every teacher is a great presenter you know वहाँ पे they are Yeah. professors so they are very research एक्चुअली oriented एक्चुअली एक्चुअली काफ़ी काफ़ी बड़े लेक्चर्स होते हैं और बहुत बोरिंग बोल सकते हैं boring हो बट जाता दे है आर right right वेरी इन्फॉर्मेटिव या they are राइट। very informative तो actually I used to watch them in 2x speed you know कि and I got used to that तो आज भी मैं या YouTube की वीडियोस 2x पे देखता हूँ क्योंकि that is what I have gotten used to सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है कि लाइक व्हाट डू यू सी इन रिज्यूमे अगर आपके पास अभी किसी का आता है अगर जो आपको रेफरल के लिए या फिर ऐसे कुछ पूछते हैं तो हाँ it depends what stage you are at you know for a fresher highlighting कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस एंड नहीं होने की हाँ वजह से you have to highlight your projects and extra राइट curricular राइट activities तो परफेक्ट that राइट time your resume is different but as you grow in the industry as you gain more experience then your resume changes then you have an experience section where you will portray हाँ the company experience I always kept my resume one page क्योंकि किसी को टाइम नहीं होता कि 2-3 पेजेस देखे हर एक चीज पढ़े नहीं and resume nowadays they go through online systems parsing या it या matches for your keyword so if you are applying for a job you have to tailor your resume for that job you have to add those वो keywords to get कीवर्ड्स scanned राइट 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 right तो पहले उसी से ज़्यादातर फ़िल्टर हो जाता है रीच टुवर्ड्स लाइक एचआर और उनके पास। right तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू थिंक द थैंक गॉड यू चूज़्ड इट एंड अकॉर्डिंग टू योर लाइक करियर पर्सपेक्टिव? thank god I did not go for higher education कि today somehow I came to a realization and this epiphany कि it's not required really. I mean today राइट। in this world of internet and chat GPT now, you हुँ, really don't need a advanced degree. You just can learn anything sitting anywhere. And I think हुँ, I made that right choice. कि even after I हुँ, did so, I try hard for attempting it 3 times and राइट। being so obstinate over getting into IIT कि आज मुझे लगता है अच्छा किया कि I left that in between and हुँ। choose to still work because I लाइक learned लाइक more. कोई रिग्रेट्स नहीं है अब लाइक सब ट्राई किया है अच्छा है इसमें आप स्विच कर लिया और अच्छा राइट है। सब ट्राई किया है, यस सब किया है एंड हाँ, बहुत कुछ अभी भी कर रहा हूँ मैं एंड सो यस और अल्टीमेटली यू और शुड बहुत एन्जॉय कुछ इट करना है। और बहुत कुछ करना है, यस ऑफ कोर्स। So next is what is one thing that you think you want to go back in future and like may want to गो change बैक इन कुछ पास्ट यू मीन हाँ, हाँ। हाँ, ओके ओह सॉरी go back in past सॉरी I wish I could go in future, but okay. हाँ, Anyway, हाँ, to change, I should have done more competitive programming while I was still in college. You know, I राइट, focused on राइट। academics more and हुँ, learning, and then उसके हुँ। बाद GATE कि I लाइक completely लाइक forgot. ऐसा हो गया कि पहले ही गेट और आईआईटी का सोच लिया था सो लाइक यू यस डिडन्ट कि गिव मच हाँ, टाइम फॉर जॉब एंड बट वो जॉब्स करना एंड चाहिए था। आई फ़ील कि हाँ, हाँ, आई शुड राइट, हैव राइट। गॉटन इंटू अ हुँ, फाइन कंपनी हुँ, देन कि क्योंकि ये पता ही हुँ, नहीं होता कि हुँ, कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कि अ, यू यू डोंट हैव दैट एक्सपोज़र कि इफ यू डू कॉम्पिटिटिव हुँ, प्रोग्रामिंग यू स्टिल गेट इनटू इट। यू डोंट नीड अ फैंसी हुँ, डिग्री फ्रॉम आईआईटी और एनआईटी। वो एक्चुअली करके वी गॉट टू लर्न एंड नाउ दिस पॉडकास्ट विल हाँ, आई थिंक शुड मोटिवेट द पीपल फ्रॉम 3 टियर कॉलेजेस कि who राइट। think कि they can't do good, they can do I think excellent. Definitely, Yeah. definitely. So, next question is, what are you looking forward for you in future related to career perspective? Like अभी भी like Hmm. कोडिंग में ही है या फिर थोड़ा आप मैनेजरियल साइड में शिफ्ट होने का इरादा है? Good question. I mean, very good question. So I am personally, because of my own interests and my own curiosity, I find हुँ, the field of product management very interesting. कि at हुँ, this stage, if you had asked me this same question 1 year back, I would have said कि I हुँ, would want to go technically and be a software architect. You know, कि हुँ, that was the next stage for me. कि but now I want to be a product manager because I think that's what I would be good at, and it takes हुँ, time for you to figure out what you actually want. And I think I have given sufficient time, more than 5 years now, to figure out what I actually want. So, I mean, yeah, I know coding, so I could do it any day. हुँ। But I don't think I love it the same way I used to love. बट आप कुछ बोलना चाहे तो I टू mean, आवर व्यूअर्स, टू आवर लर्नर्स और जो लाइक टारगेट करते हैं ऐसे
बड़ी लाइक MNCs या फिर ऐसी अच्छी कंपनीज? I think I would only say this कि if you really want to get into tech industry, try to start with being a good software engineer rather than a developer. Because if you see कि I see this trend कि in people कि C++ में ही काम करना है, C++ ही पसंद है. I mean, how could you love something as a programming language that you don't want to be flexible enough to try other things? So वही मेरा advice रहेगा कि uh, learn software engineering rather than learning a technology per se, because राइट. that's what people lack, and ये समझ में आने में you spend a lot of time. Sure, it आगे was great हाँ. talking to you, Prathamesh. Or maybe I just Yeah, talked and you listened, but thank you for that. Thank you for having me. yeah, no, it was my honor to like take you on the podcast. Yeah. So thank you, Shubham. So hope you have liked this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep learning, keep exploring, and see you in the next video. Bye.